95 no 55. Still my screen is visible to you, right? Yes. This PDF. Yes, sir. काली रो जो गप तक मु कहितली सब मन अछि तो काली रो गप वाला मन अछि ना नहीं अरे कहूनु कोन मोर त मन अछि the chola 55 this etu haba was right and hopefully you all have read it. Now we are dealing with that of the post Gupta phase more or less. A post Gupta रो गोटे स्टोरी अछि सबु पोस्ट गुप्ता फेज रे पिलाने नॉर्मली खालरे पडंती किंतु मोर और लेस समस्त स्टोरी समान काली मु तुमको कहितली जे समुद्र पाखरे थिबो से ट्रेड करिवो चोलास करिवे चालुक्य करिवे ऑफ कोर्स हम ओडिया कलिंग से करिवे समुद्र पाखरे जदी नाही जदी तार डोमिनेटिंगली किंगडम टा नॉर्थ रे बसची किबा सेंट्रल रे बसची किबा साउथ रु स्टार्ट करिकि मोस्टली नॉर्थ आड को जाउची तले मोर और लेस नॉट ऑलवेज मोर और लेस तार मैरीटाइम कॉमर्स रहिबनी जदी भी रहिबा तले एते स्ट्रांग रहिबनी सो दिस आर द फ्यू ऑफ द कॉमन सेंस आउ कोन हबो संस्कृत रहिबो बट आगुरु खाली मोर और लेस लिटरेचर रे अन्य एस्पेक्ट्स रे रिलीजन रे व्हाटएवर संस्कृत चालुथला पोस्ट गुप्ता रे रीजनल लैंग्वेजेस आसीबो ता माने नुह कि संस्कृत कमी जीवो से कमीबो इन द सेंस रीजनल लैंग्वेज ऊपर को बढ़ीची इन दैट सेंस तनो को जते पढ़िबो ऑप्शन करा ए जिनसटा मुंडरा तोर थिबार अछि नो वन वाज एंटी संस्कृत द लोकल लैंग्वेजेस विल ग्रो हेंस इट विल टुक फ्यू शेयर ऑफ इट ता माने नुह कि पूर्व जिनसर जो संस्कृत लिखा छी ताको नॉलिफाई कराबो से नुह कीपिंग दिस इन माइंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस apart from that what now cholas will come into picture when cholas will come into picture the moment cholas will come into picture you should go to the class of chera cholas pandyas they used to fight against each other and there was another player there it was Sri Lankans the today's Sri Lanka a चेरा चोला पांड्या बाडेपिटा होंती तांकरी पाखरे आ गोटे अछि श्रीलंका तांको साके भी जाकी बाडेपिटा होंती श्रीलंका इज मोर और लेस दैट ऑफ द तमिल और इंडिक कल्चर थॉट प्रोसेस and ame ko janchu the moment cholas will come into picture the first thing apart from the kings overall am mundre kon strike karibo yakar village democracy they were known for that village democracy the moment village democracy will come into my mind माने हाईली सेंट्रलाइज थॉट प्रोसेस ताल ताको नथिबो कनो विलेज को ऑटोनॉमी दिया हेची एंड विल जस्ट डू दैट आ याकर कोन अछि ना ट्रेड एंड कॉमर्स अछि आ कोन अछि ना ए माने ट्रेड कॉमर्स करछ जे कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन को संगे रे आई होप यू स्टिल रिमेंबर ये जो सदर्न पार्ट ता इफ दिस इज इंडिया hopefully you can see South Asian nations of this Islam they are not like this of course it Tamils mane jaiki southern part of the Southeast Asian nations se rule करचंदी तनु करी एथार कल्चर इंडिया रा southern culture सहित समान कलिंग वाला जाकी रूल करचंदी northern part रे तनु करी एपट पार्ट ता ओडिया कल्चर सहित समान तनु करी South East Asian nation रे northern Southeast Asian nation आज भी इंडिया को क्लिंगा बोली कहंती and other factors which we have seen. By knowing this, the Cholas who rose to power in South India after the Rashtrakutas, question पलाले एंती गारी गोल बुलेबु question पड़ची चोला ऊपर गोल बुलेलु after the Rashtrakutas introduced well organized administrative system चोला पड़ची माने एटा एक probable question well organized administrative system एठी तो मुंडरे क्लिक करे अछि जो गां मान करे भी ताकर माने कोन ग्राउंड लेवल ले ऑटोनॉमी दिया आइतला what was the most significant feature of the Chola governance okay
centralized land revenue collection directly controlled by the king नुह कहीं गाँ मान कर भी दिया आसला गाँव democratic village administration with local self governance institution. Hopefully you can read it from here. एटा हबो किंतु आमे एने टिक मारिबोनी ए जोडा का आगे देखिबो. Exclusive reliance on Brahmin officials for governance. Exclusive reliance on Brahmin officials. Exclusive लिख देला से. Reliance लिखते ले बहुत है यही पर ध्यान दा. Exclusive reliance on Brahmin's official for governance and law enforcement. No. तांकर ब्राह्मण मानकर. I hope we have dealt with the class of Varna and caste. Southern states, I have said this multiple times, because of its geography, Aravali, Vindhya, Satpura, southern state रे moral ethical concept आज भी intact अच्छी, more or less. कहीं कि ना invasions करा एठी ऐसी कि अटकी जाए more or less. Southern states को rule करे पाएंगे तांकरी लोग को बसिया पाएंगे पड़िवो. Let them be converted Muslims or whatever. तांकरी लोग को बसिया पाएंगे पड़िवो. तेणुकरी एठी इंटैक्ट हेगी रहिला. ब्राह्मणिकल डोमिनेंसी एक्सप्लॉयटेशन प्रीस्टिज क्लास डोमिनेंसी एक्सप्लॉयटेशन बेसी हेची नॉर्दर्न स्टेट्स रे ता माने नो कि साउथ रे नि हेची किंतु कंपैरेटिवली कम हेची. अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ब्राह्मणिकल क्लास वाज नॉट द फुल विलेन. सो कॉल्ड विलेन वाज दिस priestly class. This priestly class used to have control over the temples. The Brahmins or the priestly class, even at the time of Chola, had control over the temples and the education system, not necessarily on that of the governance and law enforcement part. Thus, exclusively reliance on Brahmins will be a wrong statement. A rigid caste-based administrative structure, limiting upward mobility. मु तुमको कौन कही southern states रे. Southern states is not as rigid as that of the northern state. कहीं की ना एपटे invasion हेची एपटे हेई पानी geography जोगु. And if you go to the Vedic system, the Vedic Rig Vedas रे तू पढ़िबू, even in that of the latter Vedic रे तू पढ़िबू, even today's Southeast Asian nations रे the so called Hinduism जो हमरो इनने सेठी जहाँ भी जति की अच्छी, even it is there in one family. If there are 4 sons, there can be a 4 Varna. So I hope you remember the class of Varna. It was on the basis of Guna. Then go and watch the videos. That was on the basis of Guna. Guna will determine your, that is, character will determine your professions. Getting what I'm saying? Yes, sir. Rigid based caste structure limiting upward mobility नथिला. बुझौची southern states तो बिल्कुल भी रहिबनी. तो डीटा भी गला. So we left with B. Let's see which we know. Democratic village administration with local self governance institution. चोला असला माने ए पॉइंट हमरा आपे आपे मन पड़ जियर अछि. Hence B will be the answer. तमे जानी थिले भी एइने जाऊ टेस्ट सीरीज दोउछ. Hence तमे निजो को बुझेइबो एडा कोन पे हबनी. I am not only interested in the answer of question 55. I am not interested in the answer of Chola. मते या रीजन भी दरकार है. ए सी डी कोन पे कि होउनी. जो दिन तो एमती रीजन देई पालु सब क्वेश्चन द मान तोर विड्थ बढ़ जाई छी. With जो दिन बढ़ी गला, that time you will clear UPSC or OPSC, at least UPSC prelims. OPSC is a small game. We'll come here. Now read this part. More or less I have said you. अच्छा, village governance system. देख, तीनटा जिनस अछि. उर्स, सभा, नाडु. तमिलनाडु करिया तक हमें. काली मु तुमको कही अग्रहर villages, Brahmadev villages for that of the priestly class. Hope you still remember Brahmadev villages. Brahmadev villages माने Brahmin dominated villages. आउट अछि Urs. Urs होछि कोन ना for the non Brahmins. एटा पचारियो prelims रे. Ur होछि कोन ना non Brahmin village. Brahmadev कोन ना Brahmin dominated village. बुझला. नाडु कोन
नाडु होची regional administrative unit coordinating between village and the king's officials. Village और center सहित king सहित ताकू जदि के coordinate को छेटा नाडु एरा सब मन रखिबु. Just read this. सभा उर केते गोटे अछि ब्रह्मदेव विलेज ब्राह्मण मानक पई की ब्राह्मण इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे नॉलेज को कोन बीजेपी गवर्नमेंट चलची ने देख जदि टिकट डेप्थ होला जाकी से तार जीवार स्कोप भी अछि ब्रह्म माने एठी होची नॉलेज जे नॉलेज दिए इन दैट सेंस इट इज ब्रह्मदेव hence happen to be Brahmins. Thus they were specially treated. Thus villages and lands were being given feudal structure. We can link this to that of the Gupta age. Hopefully you are in a position to link. Urs, non-Brahminical villages. Nadu is the administrative units. This shows itself the concept of decentralization. So it was not highly centralized. Clear? And मु तुम कौन कही इंडिया रे गुप्ता फेज पर जिनस गरा प्रोविंस बेस्ड हेची गुप्ता स्टाइल रे ट्रेड एंड कॉमर्स त मैसिव होथला गुप्ता रे बिकॉज़ ऑफ इट्स बिग जियोग्राफी एने भी ट्रेड एंड कॉमर्स होची एने भी बड़ मात्रा रे होची जियोग्राफी जो तू छोट हो जाईची कंपैरेटिवली टू गुप्तास तेनु करी कम लागुची हमें जदी सबुतक छोट छोट प्रोविंस को मिसई दवा जदि एक साथ कर दवा then the trade and commerce of India was extremely big. Hence we were called as the golden sink of the world. Last statement बुझेला last statement रे मु तो तीनटा जिंस कहिची last statement बुझेला prelims you got my last statement कौन कहूँ Yes, sir. Why I'm saying all these things because while reading your options you should be in a position to understand it. ए क्वेश्चन टा आसे बोली तो किछि माने हमर नाही. Read this easy. Again easy question. Decline of Buddhism. Decline of Buddhism ra points अछि गुडाए. The moment you come to know सब तो जिनस कोन करियो ना मन पकिबो. Okay. One of the major reasons of decline of Buddhism was the monasteries has become the place of lust and money. Lust, why lust? Lust because women were allowed to it. And hope you still remember the conversation between Ananda and Buddha. Je janna tale suni deitha. And Buddha will say to Ananda that I have allowed women to the monasteries. Hence, it will decline within 500 years. Mujadi women ko allow kari nathanti, then it would have prospered for more thousands of years. Buddha was correct because he was aware of the nature of the men. Thus, monasteries will become the places of lust and money. That is one of the major reasons of the decline of Buddhism. Apart from it, kings manakar support milani baharu invasion hela taka rahilani. Hinduism or Brahminical thought process asivo. Buddha will himself become one of the avatara of Vishnu and other factors that will lead to the decline of Buddhism. The moment I'll see in the question decline of Buddhism, all these things should struck to my mind in my prelims class. Now we are coming to post-Gupta period. Now you know the nature of the post-Gupta period. Getting this is the way decline of Buddhism to janlu. Post-Gupta period on nature to janichu was not a sudden event, but a gradual process. Agreed? Which of the following it is not a goal, not a major reason for the decline? कोटा नुह मु तुम कौन नॉट रे कोन जोटा स्टेटमेंट ठीक थिबो ताले हेडा आंसर हबनी जोटा स्टेटमेंट भूल थिबो सेटा आंसर ठीक हबो. So let's see which one is a reason for the decline of Buddhism. It is not पचाचे हम देखिए which is a reason. The revival and dominance of Brahminical traditions like Shaivism and Vaishnavism. This is a reason. ये रिवाइव मु तुम कौन कहथि ब्राह्मणिकल थॉट प्रोसेस रिवाइव कला निजको से निजको सब बनैला. वुमेन एंड शूद्रस मानको मोक्ष देला. वुमेन मानको एजुकेशन कथा
कहिला कैटल मान को मारी हबनी बोली कहिला बुझे होची एंड बुद्ध को बने देला 9th अवतार अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस बुद्धिज्म रिजिड होची ता भीतर संस्कृत पस्सी ता भीतर लग्जरी पस्सी एंड अदर फैक्टर्स hence revival of this brahminical tradition was one of the major cause of the decline of buddhism. This statement is correct of the decline of buddhism. This statement correct hela eta not pachhachi tale eta haboni gote cross ho gila. The destruction of Buddhist monasteries during the foreign invasions. This is the time of, in the due process of time, we'll see the foreign invasions, including that of the Muhammad Ghazani and other Islamic forces that will reduce the monasteries into pebbles. Answer will be wrong. It not, so it will not be the answer. The loss of royal patronage that had sustained Buddhist institutions. We have seen from that of the Gupta phase, Guptas never persecuted Buddhists, agreed, but Guptas will become Brahminical dominated or will become so-called Hindu dominated. Patronage kami jiva, like that it was given by Ashoka. So this statement is correct as far as decline of Buddhism is concerned. Question is or not, so this will not be the answer. The rejection of idol worship and rituals of the common masses. The rejection of idol worship and ritual of common masses. Buju. A fourth number point पाइन की Buddhism enhance थीला, body थीला, कमी न थीला. So this is a wrong statement. So this is a correct answer. So D will be the answer. So this is not a reason for the decline of Buddhism. I understand the fact you can answer this question easily, but exam hall re question tala padibo. This is the technique. The moment I see decline of Buddhism, sabutaka jinsa mo mind ko strike kala. Post Gupta period, you know the nature. Seta taba strike kala. Not deichi mane I will follow this rule. Seta strike kala. तापरे ठीक आसीबी तीनटा छक्का मारिबी तापरे टिक मारिबी the accuracy will cross almost 99.99%. This is the way of doing it. तापर at least तमे पर आसी कहबनी हे मु जानि पालिनी नॉट थिला ये थिला. This silly mistake will not happen. Question number 56 done. बुझी होची prelims के केमती क्लियर हबो how to think in the exam hall. Let's complete एला करी के आसी एमतिया. Next, easy. किछि नाही हिस्ट्री. एमरजेंस ऑफ राजपूत. देख भाई राजपूत आसला. राजपूत करो निजर गोटे गप अछि. राजपूत करो गप कोन? इजी स्टोरी. राजपूत बसचंती कोठी? राजपूत बेसिकली बसचंती इंडिया रा एरिड स्टेट्स रे. एरिड स्टेट्स माने राजस्थान जोन रे. राजस्थान जोन में काहे की राजस्थान जोन रे एंड नियर बाय एरिया राजस्थान. Here it is Haryana. Haryana re very recently I was in Haryana. एबे मु थिल सेठी. तांको गच्छ देखि तमे जानि जिवो कि एरिड सेम. तांको गच्छर ट्रंक नाही. ए जो माने गंडी न सेटा नाही. पानी तो नाही सब एतिक सरू सरू माने कोन स्टेम टाइप रो माने ट्रंक तांको. पानी ही नाही. आउ कोन से गच्छर हाइट ही छोटो. हमर जंती बड बड गच्छ आंब गच्छ सेठी आंब गच्छ नाही. They get mad. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଣସ ଦେଖନ୍ତି. I am talking of Haryana, not of Rajasthan. Haryana ରେ ପଣସ ଦେଖିକି ଭାଇ ହେଇ ଯାନ୍ତି ସେମାନେ. କହିଲେ ଏଡ ବଡ ଫଳ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭାଇ ଏଡ ବଡ ଫଳ ଥାଏ. ବୁଝିଲୁ. ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି I am saying this. I have been to Haryana few days back. एमिति जियोग्राफी रे गोटे वारियर क्लास बाहरिबो कारण जियोग्राफी ही फेवरेबल नो. So they will fight against each other. So Rajputs are more or less a tribal culture. Tribal culture है, tribal royalty था. So this Rajput will fight against this Rajput will fight against this Rajput. And these people are so good at their warfare, they will become invincible in that place. Hence, this is a feudal structure will come into picture. Rajput माने ही feudal structure प्रथमे तो mind रे strike करिया कथा. और कौन strike करिया कथा? और स्ट्राइक करिया कथा तो मुंडरे कि
पोस्ट गुप्ता फेज रे एमानकर राइज हबो पोस्ट गुप्ता फेज एमानकर राइज हबो काहे कि ना सेंट्रलाइज्ड पावर कमिटी फ्यूडल स्ट्रक्चर आसीची जेहेतु इंडियन पार्ट रे अछि तार ट्रेड एंड कॉमर्स एमाने करूथिबे ब्रिटिश आसी कि हमको कहि कि जाईची ब्रिटिश कहिची मन रखता जो साका जुना जो बाहर सब आसीबे सेही माने ही वारियर क्लास है कि इंडिया रे से माने राजपूत हेबे यार हम पारे किछि एविडेंस हम पाखले नाही आ एमाने कोठु बाहर आसी नांती से ज्योग्राफी ता तांकर समितिया राजस्थान हरियाणा बेल्ट रे माने जो बसचंदी एमानकर सी लिंकेजेस नाही मैरीटाइम ट्रेड फेड आंकर ताले सेमति किछि खास हो नथिबो आ एमाने एपड़ साइड रे बसचंती तणु के तांकर चाइनीज कांटेक्ट तो भाई कम थिबो आ मु तुम कहितली अरब किंबा इंडिया भितर जे पसची से नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज देकी पसची से हमर डेजर्ट पटे तो देकी पसुनी within this knowledge we'll see what was the primary reason of their rise जदी भी पढ़ी नथु एतिक नॉलेज तो करिक आसु emergence of Rajput as a powerful warrior class in North India was defining feature of post Gupta period they dela itself question very good what was the primary reason for their rise ए जो गपडा कहली सेटा को सबु राजपूत मन रखी जिवु लेट्स सी the influence of Central Asian warriors who settled in India and formed a new ruling lineage this is nonsense हालांकि एटा को ब्रिटिश हमु सिखै जाइतला बट दिस इज नॉट मोने तमो कोन करछि ना बुझेई ब्रिटिश हिस्ट्री बही पढिबो एटा से ठीक बोली कहबो but we are following NCERT so hence A is on let's come to B weakening of centralized empire leading to the rise of the feudal chieftains eta mon tam bujhitili this is the true nature of the Rajputs sethi pai samana ka rise hitla before putting a tick here we'll see C and D the dominance of maritime trade of common which financed the Rajput kingdoms maritime trade quade Rajasthan quade does not make sense unless and until they will grow the things will not happen and hence you will be wrong the direct patronage of Rajput rulers by Chinese and the merchant Arabs Chinese are epote Arabs merchants they do not come through that of the sands of Rajasthan they do not come hence they will be wrong I'm left with B so let's see B the weakening of centralized empires lekhi dechi post Gupta period tal e patta habo leading to the rise of the feudal chieftains काहे कि ना ट्राइबल ट्राइब्स थिले लैंडेड जोन रे रहउथले ताका ट्राइबल कोन थिले लॉयल्टी थिला feudal chieftains will be the correct 57 will be B बुझेला 57 yes sir बुझेला छाड़ो गपदक मन रहिला गपदक नोट से नाही कि बही रे भी नाही everything has a story आइला भक्ति the bhakti movement now again has a story now you are getting clearing prelims in UPSC or OPSC is not a tough thing everything has got a story इन खाली आ story जाने रच those who have written our mains हमर एठी जो माने टेस्ट सीरीज देचंती they very well know bhakti movement story question पढ़ला भक्ति मूवमेंट आगो तोर ब्रेन जीव कोठी ना भक्ति मूवमेंट रो बेसिक कांसेप्ट मन था एग्जाम हॉल ले तरबर हबार नाही काहे कि ना 100 क्वेश्चंस 120 मिनिट्स माने गोटे क्वेश्चन रे तू ऑलमोस्ट 65 66 सेकंड्स तो देई परतु मु दिए 60 सेकंड तेणु करी मो पर 60 सेकंड अच्छी सो डू नॉट गेट हरी जोठी भी तत तुम टाइम लागुची देयर विल बी क्वेश्चंस अहेड जोटा 10 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड रे ही जीवो सो यू विल सेव टाइम सेटा होची क्वालिटी बुझेला एंड मॉडर्न हिस्ट्री द भक्ति मूवमेंट माने कोन मी खाली एतिकी भक्ति मूवमेंट माने ही एतिकी ता छडा आउ किछि नै मी माय गॉड फुल स्टॉप आउ के नहांती मोरो मो गॉड को संगे पर्सनल रिलेशनशिप अछि तोर ता भीतर किछि काम नै एने तू किए भी ही था whoever you damn might be let you be scripture or a prophet or damn anyone my god be can of any type can be nirguna can be saguna तारा आकार थाई पारे पर्सनालिस्टिक नोशन ऑफ गॉड
निराकार भी हे पारे impersonalistic notion of god मु भाई आ मो गॉड मोर ता भीतर किछि दरकार नै तू जहा आनिबु मु ता भीतर बना दे मोर जहा आला आला बुझी this is the essence of the bhakti movement bhakti movement is one of the primary reasons of the sustenance of Indian culture and in Indian society despite of the Islamic invasion in India Islam became successful in West Asia, Central Asia, parts of Africa, and major parts of the world failed in India because of the success of the Bhakti movement. Why things will be highly personal? My God also stop. The religious aspect of the Brahminic dominancy will be nullified by that of the Bhakti philosophy. Thus, things will become very light, real and natural. Under that circumstances, the Islamic solution cannot consolidate individuals to become Muslims and then become Muslims. Only Indians can become Muslims. By that, you focus on affected Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and many parts of the world. Under this knowledge, you can structure, which is the following. This is not a characteristic of this movement. Not one clear. We just understand. First, on ritualistic practices. Now, how better rejection of caste and social hierarchies. Bhakti movement has rejected caste. Now, yes. Social hierarchies in religious practice. Now, yes. मन रखा गोटे कथा भक्ति मूवमेंट रो एम नथिला सोशल वेलफेयर करिवा आई रिपीट भक्ति मूवमेंट रो एम इट वाज नॉट द एम ऑफ भक्ति मूवमेंट टू डू social welfare will become a consequences of it if I do not believe in anything else rather than my God and God has created all so we all will become equal. Hence, no social hierarchies. Hence, no caste system in this sense. Hence, we will be correct. It is the answer of it. A preference for Sanskrit over vernacular language. Bhakti movement ro success ro karan thila se vernacular language re spread karthile. Bujhauchi? Hence, the C statement will be wrong. C will be the answer. The rise of poet saints who popularized religious teachings through songs and poetry. Answer. C will be the answer. Getting the Bhakti movement? Bhakti movement रे या छड़ा कहार किसी डाउट अछि? No sir. Good. Just read these names, highly needed. Always. Now tell me what is Nayanars? Or what is Nayanars? सर एमाने शेवाइट्स थिले जो माने 8th सेंचुरी से टाइम रे स्टार्ट हेतला सदर्न इंडिया रे भक्ति मूवमेंट स्टार्टिंग अलवर्स माने थिले वैष्णवाइट्स. Now why these people are Shevites? Why they are called as Nayanars? अरे नयन आखी माने ट्रिपल आई वाला कांसेप्ट. What is the third eye? Ethiodachy na. What is this third eye? Sixth sense. Sixth sense. What is this third eye? Could be. What is this third eye? अरे महादेवंकर ए जो एथियोडे आखी थाए सेटा कोन पे थाए? Destroying. Destroy. He will destroy what? अरे प्रलय तो हो. प्रलय हबो. अरे प्रलय रे कोन हबो? विनाश हो. अरे कहार विनाश हबो? सब खराब जिंस. Ignorance. अच्छा. Yes. Ignorance is a cause of suffering. केथर बुझेबे तुमको? नटराज जो नाचुचंती गोटे द्वार ऊपर
द्वारका किए ना गाँ पकेब तमे मोर सब ignorance ignorance पृथ्वी ध्वंस होची what is that ध्वंस your ego you are suffering because of your ego the ego will be destroyed ना गाँ केतर बुझेबे एकरा Arab invasion sin गप होची का अरब ଟିକେ ମୋର ଡାଉଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ୟାର ଆଗରୁ ତାର ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଲେ କି ତା କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ ରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜମ ଆଉ ଜୈନିଜମ ସହିତ ଜଏନ କରିବା କରନୁ ଦେନ୍ व्हाट ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବି ନା जैनिज्म बुद्धिज्म କିଛି ନଥିଲା ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ଆଣିବାର जैनिज्म बुद्धिज्म आसी सोसाइटी रो सफरिंग को ठीक करिया सेबा कहूची तांकर प्रथम स्टेटमेंट इज द फर्स्ट आर्य ट्रुथ इज द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ सफरिंग अष्टांगिक मार्ग दउची सफरिंग रु बाहरिया पाई की ये माने सेटारे कॉज हबो एटारे कॉन्सिक्वेंस हबो हां सेटा आसी सेति पई की जेतोले बुद्ध को 10 मेटाफिजिकल क्वेश्चन पकड़ाला व्हाट बुद्ध सेड oh I am going for a lunch break ताले छुट्रे मु जाउची आजी हबनी सेशन बंद क्लास बंद he never answered the 10 metaphysical outer worldly questions ए 10टा मेटाफिजिकल क्वेश्चन को आंसर करिया पई तले बाहरिले पोस्ट बुद्धाइट्स that will lead to the rise of schools in Buddhism महायान हिनयान वज्रयान ए 10टा मेटाफिजिकल क्वेश्चन को बुझो बुझो स्कूल्स बाहरला बुद्ध कोइ नथले ना किछि महावीर गेटिंग किंतु भक्ति मूवमेंट रे से एम ही नथिला किंतु हेई गला दैट्स अ डिफरेंट थिंग कास्ट सिस्टम ऊपर ऑनस्लॉट हेई गला हबो ही ना मी माय गॉड फुल स्टॉप माय गॉड एंड योर गॉड आर सेम ओनली hence you cannot be different from me you cannot be inferior or I cannot be superior caste system caste hierarchy ऊपर onslaught हे होला that's a different thing aim किंतु नथिला एटा मन को थबु prelims question काला बळ the Arab I hope things are getting clear right the Arab invasion of Sindh ये पूरी स्टोरी किछि नहीं UPSC prelims is just a bloody cakewalk yes it has just a way the moment I will read this I should be in a position to recall Muhammad bin Qasim आसीगला 8th century and go through any textbook of India जेति तो मु देखछि मु कोठी भी 8th century एडिकु इंडिया रा कोनोसी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक रे एलाबोरेटली पढिया मु केबे देखिनी कोन पे देखिनी विल सी इट लेटर mark a turning point in India's history what's the most significant outcome of these invasions there is a very beautiful story Muhammad bin Qasim was that idiot who had introduced rapes in India and we know the consequences what India is suffering today from that he was a man he was a guy or a teen guy of 19 years of age and other stories we don't have time to say he had basically came to kill and he came to the kingdom of Raja Dahir and he has basically came to kill the great grandchildren of the Prophet Muhammad kara great grandchildren ko mariya pai asila dabu and hence we Raja Dahir gave asylum to the great grandchildren we saved them and Muhammad bin Qasim got defeated twice or thrice तापर से आसिकी केबे अटैक करिवो and he will attack at night and Indians were sleeping because we are doing something called as dharma yuddha राति रे संध्या गला परे हम युद्ध करिवनी we fail to understand the nature of the central Asians do their work at night or West Asians do their or these Arabs or whatever do their work at night why सकाळे सेपटे खरा होची they cannot move there could be dust storms so they used to move in the Arabic sands at night काम सब राति रे हुए
their calendar is hence lunar. Amar sabu kamo dinar huye, hence our calendar is solar. He introduced, or he started killing, or he attacked the Indians or since that night. Hence our people are sleeping. When the message spread, am lokone bharosa kaleni ki ratire attack he paribo. Then he introduced rapes. Indians were shocked he marigale. Getting? But many of the places, now this is Arabic history. I'm not saying this. This is Arabic history. They are saying this. Indian history book will write this. I'm saying you both of the story. You should be in a position to choose or eliminate from that of the options given. The Indian history says कि Balochistan side रे जो अच्छी what ocean or Arabian Sea सेठी Arabic traders माने आसुले Arabic traders मानकु सिंध र किछिटा लुटेरा और चोर माने हयराण करथुले तार बदला नवा ପାଇଁ कि आस्थिला मोहम्मद बिन कासिम. And let me tell you, we got the bloody golden sink. Arabs were poor beggars, and the rich people do not loot the beggars. But this is a history written by that of the Indian historians, and I cannot help, I have to say both of the story. Be in a position to see कि तमरो भाई क्वेश्चन ता पचारुची कोन बुझला. Muhammad bin Qasim, one of the stories, Indian lutera's किछि चोरा हमर थिले जी जे कि ताको ट्रेडर मानन को हयराण करथिले. This is one of the story which does not make sense. Another story given by the Arabs themselves, that he came to kill the great grandchildren of the Prophet Muhammad. He was being set by King Dahir. He got defeated twice or thrice. Then he attacked that night and got the victory. This is the first direct Islamic contact as an aggression to that of the Indian subcontinent or that of the Sindh. I hope you know where is Sindh in that of the Pakistan's map. Sindh is in Pakistan. By knowing this, we'll come to the question now. What is the most significant outcome of these invasions? Okay, fine. देखिए, outcome here we'll see establishment of large-scale Islamic rule in North India. It will take 500-600 years more, and hence fast large-scale Islamic rules will come with that of the Delhi Sultanate. So let Delhi Sultanate come into picture. Hence, what is the question? What is most significant outcome? Not I just came to see this. Most significant outcome. It a goal. Then we'll come to the options. Let's see. Establishment of large-scale Islamic rules in North India. No. Delhi Sultanate large-scale. Option A is wrong. Introduction of new scientific mathematical knowledge from the Arab world. From nowhere. This is printing mistake. Sir, एटा ही डाउट थिला माने आंसर का माने आमटो केमती गला थो माने ताकोडो दिसला. No, that won't make sense. This is printing mistake. Human creates mistake. This shows I'm a human at least. This is printing mistake. This is typing mistake. This is a very big mistake though. Not practically possible. Okay, mathematical, because we have already the sets of all the great people have already came to India. We know almost everything by that time, so this is not possible. By logic, this would be wrong. This would be wrong. This is a printing mistake. Answer B, na. Let's see the explanation. The temporary decline of Indian trade with Persian Gulf and West Asia. No. Our trade and commerce. See, they cannot leave us. We have fed the world, these bloody Europeans and these Arabs and these West Asians and the Central Asians. It is their history book. They are saying this. Indians has given us food and clothes, and we survived because of him. They claim this. There are 1,24,000 prophets. 1,24,000 prophets in the Abrahamic thought process. Every prophet has talked about Hind.
let it be the Prophet Muhammad or Prophet Jesus. Everyone has the Western thought process is incomplete without him. It's not being said by me, it is being said by their prophets themselves. So hence temporary decline, no, never been decline is wrong. The complete destruction of Hindu Buddhist institution in Sindh, of course no, eta habo kebe na 1947 pore. 1947 Sindh still have few Hindus and Buddhists, but almost nil. That's a different thing. So all the four are wrong. Eti tikke jadi thik thak kar debo tale B will be correct. All the four are wrong. Let's make a E, none of this. Answer will be none of this. देखिए कौन लिखा है एक्सप्लेनेशन में हमारा बी रे चेक दैट पार्ट आल्सो जब भूल लिखा है तो अब the Arab world absorbed एटी ठीक लगा है Arab world absorbed Indian knowledge in mathematics, medicine and astronomy, correct. Indian numerals and concept of zero, correct. It will जाई सब the text like Brahmagupta's Vidad Brahmastupha Siddhanta, correct. ठीक है, explanation is correct, not just read it. Post Gupta period. काली मु क्लास है बारंबार कोई पोस्ट गुप्ता स्टोरी जो पोस्ट गुप्ता देखिबो से स्टोरी को तमे सांग सांग आंदो मन भीतर मु तुम कौन कही पोस्ट गुप्ता पीरियड रे बही लेखुची देयर इज डिक्लाइन ऑफ संस्कृत बी प्रैक्टिकल संस्कृत को कहीं जाई मार नांती लोकल लैंग्वेजेस बढ़ जाईची बुझला इन दैट सेंस डिक्लाइन करची नॉले डिक्लाइन है ही नहीं व्हाट वाज द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस era's literature decline in Sanskrit as a dominant literary language ना भाई decline तो करनो बुझ आउ गोटे जिनस आगु को आसी बारी माने तोर तू आगुरु क्लास टॉपर थिलु तोर आस्तला 80 एने मिस्टर वाई हैज बिकम क्लास टॉपर तार आसी 90 किंतु तोर एने से 80 रे अछि तो मार्क कमिन तार बढ़ी जाईछि दिस इज द सेंस Sanskrit was still a sacred language, and hence various hymns and mantras are still in that language. It is being translated to various local language poems, literature, in that sense. So decline in Sanskrit will be a wrong statement. Emergence of regional language and quote poetry. Na ha, quote picture heichi. कौन ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ରେ ବୁଝେଇଛି I will not tell it now again. କାରଣ local players ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ. Hence, if this is Maharashtra, Marathi will come. Gradual development of Marathi will come into picture. Gradual development of Odia will come into picture. Prakriti ने develop करी Odia होउची. आगुगु हब्बो medieval phases रे हबो जाई. But that development is going on because in the post-Gupta phase, regional powers has come into picture. So we will be answered. But let's see, check C and D. Rise of historical chronicles detailing royal conquest. That's simply saying. The complete absence, not complete absence, the complete absence of Buddhist and Jaina text in literary production. Or let me tell you, Harshavardhana has become Buddhist. He was a post Gupta man, right? Just यहाँ पर आसियो, कहाँ पर गुप्ता पर आसियो. Buddhism को कहीं मारी ना आंधी, Jainism को कहीं मारी ना आंधी. India रे debates over. We do not put swords on your neck and we do not ask to convert. We simply debate. If you are best, then I will convert. If I am best, then you will convert. Again, it is not conversion like that we are seeing today. Again, it is not conversion. यदि मते बुद्धिस्ट फिलोसफी भल लागिला मु मानिबी मोर भाई को जदी जैन भल लाउची से मानिबो चंद्रगुप्त मौर्य was a Jain, Ashoka was a Buddhist in the same family lineage, so no big deal in it. So answer will be B. Things are getting clear or getting complicated. बुझियो जी क्लास रा I guess it. नहले मु कमी देबी. I will not say all these things. I will simply do like other coachings are doing. And we are not a coaching center. Let me say you these things very clearly. Establishment of Vijayanagar Empire. काली क्लास को आई जी पोस्ट गुप्ता गप मन पड़ला. पोस्ट गुप्तर गप एठी आनी पूरा थो पूरा काम दो तापर विजयनगर निजर गोटे स्टोरी अछि
in the 14th century marked, see, Vijayanagar Empire ro asithila 14th century ku mu aslini bari 14th century re Islamic invasion India re rampant, immense. North India is suffering from all the sides, massive conversions, this stories, that news, everything is coming. Vijayanagaras or this southern state people will get determined to stop that Islamic movement towards the south. Islamic Sultanate ku resist kariyaku peninsula re, I'm saying in the name of religion, the Hindus will get clubbed up or will get raised. This is the crux, if not the full story. That is called as Vijayanagar Empire. ये भी डिक्लाइन करिवो, डिक्लाइनेशन एम्पायर रो डिक्लाइन रो जहा जहा सब रीजन एक कॉमन रीजन थिला विजयनगर एम्पायर रो डिक्लाइन रो भी से रीजन. बट दिस इज द बेसिक स्टोरी. पोस्ट गुप्ता रो जहा जहा नेचर थिला विजयनगर भी से नेचर रहबो, फ्यूडल स्ट्रक्चर रहिबो नाय कजा सेवन. जस्ट वेट एंड वॉच. बुझौची getting what I'm saying? Trade and commerce रहिबो ना. हां, लेट मी शो यू ऑन मैप Vijayanagar Empire. Okay, this pink wala part is, I hope you can see this big one. This is here on the screen, right? This is Vijayanagar Empire. Which to the say deep south bhitere Pasiada was never an easy. Hence Islamic invasion को ये अटकेवा. Deep south भितरे ब्रिटिश भी जाके सेमती किसी काम करी पारनी unless and until से तमिल मानु धरची. तमिल मानु को कहीं धरिवो. We'll see that in the British class, they will first in that of the Indian peninsula, British will first try with the Telugus. Telugus का कथा सुनिबेनी. Then they will try with the Kannadigas. सुनिबेनी. Then they will try with the Tamils and Malayalis. Tamils are still today are very emotional people. Hence are the warrior class also. तेणुकरी से माने तमिल को धरते हुए तमिल को धरिकी ही डेक्कन को जीतिबे से माने. जेमिति ओडिसा रे पाइकर्स एंड खंडाट्स को धरिकी ही जीति परियो ब्रिटिश. नले ओडिसा को केही हरै परिबेनी. हरै भी हेई नथिला. सबु बेले वारियर क्लास को ब्राइब करिक से रूलिंग पोजीशन में बसैबो ब्रिटिश. तेणुकरी से जीतिची. Similarly, to much extent has been done by Akbar also. Rajput manu dharibo, Maratha manu dharibo. Jetale Mughals पसिबे कटक भितरे पसि सी आगो काहा को धरिबे वारियर क्लास को ना. ताकू कोन करिवे ओडिसा रे खाली गोटे बसियो मुस्लिम गवर्नर, बाकी सब तळे हिंदू रहबो. That is called as Akbar. That is the reason of success of the Mughals rather than the other kings of the Delhi Sultanate. Getting nijo bhitere bhangi rakho, then they will kill each other. That was the reason of the success of Mughals and that of the British. Unfortunately, today's political class also. By saying this, let's come to this question number 61. When we are reading history, we should be in a position to compare past and the present and to foresee our future. Hence, we are being taught history. By saying this, here, establishment of Vijayanagar Empire in the 14th century. We know the story of it. Significant shift in Indian polity. Okay, what was the primary motivation behind this foundation? Behind its founding, okay, and you know the founding, right? To promote trade and commerce with Southeast Asia. So that was Southeast Asia trade and commerce Haiti, but that was not the primary motivation. To create a strong hold for the propagation of Bhakti movement, full stop. I read in the due course of time, right? So B will also not be the answer. This one we know. Vijayanagar पढ़ियो माने तो ये point मन पड़ जाए रचे. To resist expansion of Islamic Sultanate to the southern peninsula or the deep south. दर लिखियो दल भी चढ़ियो. C will be answer. विजयनगर रे पोस्ट गुप्ता रा जहाँ सब गप फ्यूडलिज्म ये से सही ची ना. हाँ, टेम्पल है ची ना. हाँ, बड़ा बड़ा वो टेम्पल है ची ना. हाँ, टेम्पल ला जहाँ सिग्निफिकेंस लिंक करके एठी पचले आंसर आवा ना. हाँ,
आउ गोटे स्टोरी कौन ना सी सल्तनत को किंबा इस्लामिक सल्तनत को डीप पेनिनसुला को आसिया पई कि से अटकेची जस्ट ताको ऊपर बसथिबे गोलकोंडा वाला गोलकोंडा भी इस्लामिक रूल थिबो तेनु करी दे हैड रेजिस्टेड दैट यार फाउंडर ना होची हरिहर एंड बुक्का पडला बुक्का राय फर्स्ट हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट ऑफ संगम डायनेस्टी just go through it, it's an easy thing to do. ना पढ़ी की जो विजयनगर बीजेपी गवर्नमेंट बसी पचारियो पोस्ट गुप्ता तो पचारियो विजयनगर because it's a pride because it has registered Vijayanagar Empire administration was marked by a distinctive decentralization मु तुमको कोन कहितली पोस्ट गुप्ता पर डिसेंट्रलाइजेशन रहिबो मोर और लेस सब जगह रे से स्टोरीटा एठी भी फिट होची which of the following best describes this system निजे लिखुची डिसेंट्रलाइजेशन तापे लिखुची ए हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भाई भूल हे गला स्टेटमेंट रो ही भूल हे गला with direct control over all provinces does not make sense. The statement is given of decentralization. A feudal system where local chieftains have hereditary control over their territories. याको कुआबा नायक कोई नहीं. Just wait and watch. ये ठीक है वाला feudal system बॉडी ची. Feudal system was one of the cause of the efficiency in the governance. No sense of doubt in this. जेतेबेले गोटे नुआ सिस्टम स्टार्ट होची नुआ किंगडम आसुची कि तो फाउंड करूची से ग्राउंड रियलिटी जानूची से एफिशिएंट किंग ही की बसची से फ्यूडल सिस्टम देला पर भी फ्यूडल लॉर्ड्स मन को कंट्रोल करि पारुची फर्स्ट पॉइंट विजयनगर जेतले तार पिलारा पिला आसुचंती किंग ही की बसचंती से ग्राउंड रियलिटी जानी पारु नांती फ्यूडल लॉर्ड्स को संभाली पारु नांती से फ्यूडल लॉर्ड्स माने पावरफुल है कि आगु जाय कि से माने राष्ट्र भांगुचंती जेमिति आई डोंट वांट टू से दिस थिंग्स अमिताभ बच्चन इज अ बिग स्टार अभिषेक बच्चन इज नॉट व्हाई नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू नो मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट ऑफ द राहुल गांधी इट्स अ डिफरेंट थिंग मोदी हैज गॉट दैट ग्राउंड ग्रिप मिस्टर गांधी नाउ did not have से जदी 1990s जो बुली था ग्राउंड रे एइने से ओटा बड़ नेता ही था ताको ग्राउंड रियलिटी से जानि एइने भी बुले ता पकर हे जाई परियो बुझी होची नो सेंस ऑफ कंफ्यूजन जतले गोटे एम्पायर स्टार्ट होची फ्यूडल स्ट्रक्चर जोगु डिसेंट्रलाइजेशन रहिया जोगु से गवर्नेंस रे ताको हेल्पफुल होची आगु जतले सेही एम्पायर ता डिसइंटीग्रेट होची सेतबेले जो स्पेसिफिक किंग बसची से ग्राउंड रियलिटी जानी पारुनी कारण से ग्राउंड रो आसीनी एई फ्यूडल लॉर्ड्स गरा आगु जाय कि सेमान सब जिंस भांगीबे जेमति गुप्तास देमसेल्व्स वेयर द फ्यूडल लॉर्ड्स काइंड ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स पुष्यभूत इज देयर फ्यूडल लॉर्ड्स बुझियो जी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग फ्यूडलिज्म बी विल बी द आंसर द मंडल सिस्टम मंडल माने एठी प्रोविंस माने हमर जंदी इन स्टेट अछि वेयर पावर्स वाज shared equally among regional governors no not equally council of ministers from various regions making collective decisions no how we achieve there are various other things to say are point rahla Vijayanagar again came now we have no other option than to say economy of Vijayanagar empire was notably prosperous भाई रहिबो डीप साउथ रे बसची तार पानी एपट अछि ट्रेड रूट अछि तार सबु हो पचाची देखे मोस्ट सिग्निफिकेंटली माने भाई गोटे तो या भीतर काढिबो चारटा देछि तीनटा को तू एलिमिनेट करियो गोटे काढिबो मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू दिस इकोनॉमिक सक्सेस ओके मोनोपोलाइजेशन ऑफ स्पाइस ट्रेड रूट्स टू यूरोप ना भाई ट्रेड रूट थिला यूरोप को मोनोपोलाइजेशन तो नथिला बुझला ट्रेड रूट थिला ना हां मोनोपोलाइजेशन थिला ना ना establishment of a standardized currency system across the empire okay but that is not the most significant cause of the
economic success. Development of an extensive irrigation network, एमाने irrigation ऊपर बहुत काम करथिले. So what? Irrigation ऊपर काम करले. See, right now try to understand. जदि तू ए deep south रे आसे कि बसचु, this is Western Ghat, this is Eastern Ghat. Western Ghat रे पानी टा पसची ए पहाड़ टा बड़ पहाड़ टा, तेणु करी सबु तो वर्षा ए कोस्ट रे गला. तले भितर को जाउची लीवार्ड साइड रे पानी कमी 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 जाउची. ईस्टर्न घाट रे ए पार्ट टा मानसून बाईपास कर जाउची. आई होप आई डू नॉट नीड टू टीच यू ज्योग्राफी. व्हाई? कारण ईस्टर्न घाट रे पैरेलली मूव करियोची के ना मानसून टा ए कावेरी डेल्टा साइड रे और ईस्टर्न पार्ट रे वर्षा होउनी. जेतले नॉर्थ वेस्टर्न रे वर्षा टा फेरी के आसी सेति वाला जहां वर्षा होउची तेणु करी कंपैरेटिवली कम वर्षा होउची. एतिकी ज्योग्राफी बुझेला आगो. Yes, sir. अन्य माने बुझ परलो. तेणु करी याकर पूरा लाइफ लाइन चलिबो जो नई गरा आसी जा भितरु वेस्टर्न घाट जो पूरा आसी नई गरा आसी ताको पूरा गेम नई ऊपर. तेणु करी नई रु हेंस विजयनगरस they were aware ना कोन if they want to maintain a big army ताको आर्मी मेंटेन करे पड़ियो. बा ताको आर्मी काई मेंटेन करे पड़ियो ना ऊपरे जस्ट एठी इस्लामिक सल्तनत माने अटैक करचंदी कहा ऊपरे ना विजयनगर ऊपरे. हेंस दे नीड टू मेंटेन अ बिग आर्मी. ताको पाखरे ना जोड़े बाट अछि. दिस इज हिस्ट्री. आइदर से निज लोकन को टू एक्सटॉर्ट करि परिबे टंका जेमिति एमाने एठी करूचंती किंबा से रेवेन्यू निजे जनरेट करिवे. एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी एग्रीकल्चरल सरप्लस दरकारे तेणु करी फॉर दैट दे नीड आल्सो मनी. तेणु करी से माने केनाल खोलिले इरिगेशन सप्लाई देले फैसिलिटी दे कि एग्रीकल्चर बढ़ाइले सरप्लस आसिला ट्रेड एंड कॉमर्स करले ए जगह टको एते रिच एंड प्रॉस्परस करले कल्चरल डेवलपमेंट भी करेले. तेणु करी लोकंकर सपोर्ट याकू रहिला. तेणु करी एमाने नॉर्थ वाला आउ साउथ को इन्वेट करि पालेनी. दैट वाज one of the tactics to maintain that of the huge army. For that they need money, or that of the huge bureaucracy they were maintaining for the welfare of the people. Along with fighting against these northern powers, they were in a position to go for the art, architecture, literature, temple, वो तो जहाँ कोई भी नहीं आया उधर डेवलपमेंट ही थी. Thus, extensive irrigation network को जब specifically question आसियो, then this could be the other aspect of the answer. Hence, you will be answer development of extensive irrigation network supporting agriculture. मु तुम कोन कहली से माने टैक्सेशन हेवी पके पे चाहू नथिले काहे कि ना यार भितरे जदी गोटे अपवर्ड मूवमेंट हे जीवो ताले ये ही डिसइंटीग्रेट कर जीवो. इंपोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेस ऑन फॉरेन ट्रेडर्स ना नो ट्रेड एंड कॉमर्स को ये इंटैक्ट रखिबे. बैटल ऑफ कलिकता माने विजयनगर ने सॉरी मी. वन मोर क्वेश्चन ऑन विजयनगर. Battle of Kalikota in 1565. Battle of Kalikota re, the moment it will come, it should strike to your mind. The ये विजयनगर ऊपर है गोलकोंडा प्लेस रे कौन कहती दिल पेनिन थेड़ी की बसला सल्तनत बसला था ऊपर. Various Muslim forces or Muslim ruled places will get clubbed up against the Vijayanagar and a battle will happen. 80 Vijayanagar hariyo. That will call as Battle of Kalikota 1565. A significant was a turning point for the Vijayanagar Empire. बुझला ऊपर ने Muslim states मिसिवे या विरुद्धरे लागिवे. One of the good thing or better thing of Vijayanagar Empire was that despite they were maintaining the Hindu system and were standing against the Islamic domination of the region, they had various generals happened to be Muslims. That various generals happened to be Muslims. Now, how is that a possibility? See, in a politics, rajanitire kichi possibility hai pariyo, so no big deal. In the sense, now those Islamic places, not Islamic places, but those Muslim ruled places, or those foreign
invaders Muslims rule places. सेमानकर कोन इट्स अ पावर स्ट्रगल निज निज भितरे बाडे पिटा हुंती enemies enemy is friend. In that sense they will become the friend of Vijayanagar, and hence Vijayanagar was also doing politics, no big deal, so they will also keep their various Muslims loyal generals in them. So there should not be any sense of confusion while reading history. These things happens while you study politics or governance system. Eta habo rajaniti re etikra bhai habo. So let's see the immediate consequences of this battle. Vijayanagar ethare hari chela. Annexation of Vijayanagar territories by the Mughal Empire does not make sense. Fragmentation of the empire into smaller independent kingdoms. Kana hari chi ene rangi jibo ene yankar ji so feudal lords thile. Feudal lords do not think like that of the zamindari system. Feudal lords army भी maintain करियो more or less independently rule कोची तारो छोटिया जोन भितरे बुझला जेमती सेंटर टा weak हवा regional powers will become powerful and hence will lead to disintegration. This is valid for everywhere throughout the history. Establishment of new capital Penukonda does not make sense. Emergence of Hindu dominance in South India. Hindu dominance sorry होला. So B will be the answer. बुझेला अरे पूर्ण थरासला विजयनगर. Any doubt? Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Either तमे किछि बुझी पारुना किंबा बही पढ़ी के आछो. The things are not that easy. जदि न पढ़थु ताहले बुझ परिबुनी. हम माननी कि चलछु कि तमे किछटा पढ़ी के आछथिबो, but overall knowledge which I'm giving will be extremely helpful. Just wait and watch for your prelims. जो माने एथर हम पर मेंस टेस्ट सीरीज देइचंती, just go and ask them if you know someone it was helpful or not, and I'm giving you guarantee. See, while solving this prelims test series we are ensuring कि तम लाइफ रे कष्टटा बढ़ू, तम कष्ट हो, तम लाइफ रे दुख बढ़ू, तम गुडा आंसर न करि पार. You will be forced to go to books. 2 घंटा भितरे इनिशियली तुमको टेस्ट पेपर सारिया नहीं. धर क्वेश्चन नंबर 65 आसुनी त भाई बही की जा कोन थरा पढ़े खोज जाने सब कर तापर आसी की गोटे मार्क करे ठीक. 2 घंटा रे सारिया नहीं टेस्ट पेपर इने. मेंटेन क्वालिटी देन विल गो फॉर पेस. आगो क्वालिटी मेंटेन हो. अब ये तो दिस पार्ट इज इजी. टेस्ट 2 is tough. I made that tough deliberately. After doing Ghatna Chakra, R.S. Sharma notes and few of the videos which is in YouTube, and after doing this, you will be in a position. If I do not know, then you also do not know. This is called as competition, and we are in a competitive field. Hence, we'll play in the other places. So this is the way of clearing prelims. Let's come to Vijayanagar once again. Vijayanagar Empire, Vijayanagar is renowned for its contribution to art and architecture. Art and architecture habo na kahi ki nampare bhara टंका अछि. टंका केमति आइला ना irrigation करiki, agriculture करiki, and commerce करiki. Which of the following structure exemplifies this legacy? Hampi or Hampi? Virupaksha temple at Hampi. Factual, and we cannot help. Vijayanagar पढ़े मैंने विरूपाक्षा temple at Hampi, and I do not need to say where is Sun temple at Konark. Brihdeshwara temple पढ़े मैंने आखी बंद करी की चोला. I do not want to say about A, but B is Chola. Meenakshi temple Nayak. याकरी पर आसीबे नायक. वृद्धेश्वर पढ़िबो माने चोला. राज चोला मन देखिए जाइछु प्रिलिम्स माने काम दो. सन टेम्पल नरसिंहदेव गंगा डायनेस्टी कलिंग. नो नीड टू एक्सप्लेन. वृद्धेश्वर टेम्पल जेतले मु स्टूडेंट थली चोलार जोड़िए टेम्पल मोर मन थिला. जोड़िए
वृद्धेश्वर टेम्पल ऐरावतेश्वर टेम्पल जहाँ पढ़ियो मेन्स भी सेया कर देके आसी प्रिलिम भी सेया कर देके आसी सेमिति याकर कॉमन थिला मोर विरूपाक्ष टेम्पल कोठी ना हाम्पी रे विजयनगर एरा कृष्णदेवराय मन लग देखि जा मीनाक्षी टेम्पल नायक करथिबे नायक केबे आसीबे एई याकरी पर आसीबे मधुरै रे स्टार्ट करथिबो पांड्या एक्सपांड करिवे नायक तेनु करी मोस्टली कुहा जा नायक बोली हला स्टार्ट करछि पांड्या को पांड्या चेरा चला पांड्या से पांड्या इट इज नॉट अ विजयनगर ओके भाई कौन सा विजयनगर आइला हो हला द सोशल फैब्रिक ऑफ द विजयनगर एम्पायर okay question is social fabric was marked by religious tolerance by ये तो हबो we do not put swords on someone's neck and we do not ask to convert we are good people which practice best illustrates this character oh bhai Vijayanagar empire by religious tolerance ठीक अछि religious tolerance ऊपर क्वेश्चन ताल कोटा बेस तक देखौछ exclusive patronage of Hindu temple by the state मु तुम कोन कहितली बुद्धिज्म जैनिज्म को मरा हबनी इस्लाम भीतर पसि गलानी मुस्लिम को मरा होनी मस्जिद भंगा होनी rather they are generals in the army बुझला तन कि exclusively so we are secular by very nature and rest of the things done in a class as of now level inclusion of Muslim commanders in Vijayanagar army correct because which practice best illustrates this character कोटा को देखो बहुत भलो है ना बीटा और let's come to see prohibition of non Hindu religious practices within capital na bhai semti kichhi we do not stop anyone from doing anything which satisfies their spiritual sanctity we do not do that hence we will be wrong mandatory conversion of subject of Hinduism never goes for conversion we don't have that concept and hence we will be the answer एटा को जस्ट माने तुमको आगुरु बुझे थिले कि जनरल माने थिले आउ राजनीति रे सेमती हुए नो बिग डील कौन थे विजयनगर ओके विजयनगर एम्पायर played a pivotal role in significant role in the promotion of literature okay which language revived significant patronage during this period मु जतले परीक्षा दोथिली मु देखे लैंग्वेज लिखा आइछि ना लैंग्वेजेस लिखा आइछि यूपीएससी सबले गोटे एमित दे कि गोटे स्लैश दे कि ईएस लिख देथियो माने लैंग्वेजेस लिख देथियो एठी लिखछि लैंग्वेज दिस पीपल आर स्मार्ट ऊपर भी लिख देछि ऑल ऑफ द अबव ओके वेल फाइन विल सी विजयनगर जियोग्राफिकल एरिया तमे जानलो कोठी अछि मु तब कोन कहछि संस्कृत डिक्लाइन करनी माने नुह कि लोक एंटी संस्कृत हेचंदी संस्कृत रहिछि संस्कृत तो हबो तमिल तो हबो तेलुगु तो हबो कारण सेही जोन ने समान बसचंती आ तुम कोन कहथिली पोस्ट गुप्ता फेज रे रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप करिवो रीजनल लैंग्वेजेस आसिला आ ए जियोग्राफी तमे ताको आगु जानिछ संस्कृत तो सबले रहिछि आंसर विल बी ऑल ऑफ देम just by knowing where the Vijayanagara was and Sanskrit will remain set languages kon you are in a position to do it बुझेला अच्छा अरे पढ़ दो बा भक्ति मूवमेंट कहार डाउट अछि भक्ति मूवमेंट पचार जाओ सरला विजयनगर हमर संगम क्लास रे बड़ कथा कहलु डोंट सी द आंसर देखसानी रे रह जा अच्छा गाउन उठी दी कहलु व्हाट विल द आंसर ऑफ 68 इट्स अ वेरी इजी कौन सा देखाला देखो आंसर देखि कि कह किंतु बुझेई दे the term sangam in the context of ancient Tamil history by yato solve out kichi nahi refers to answer kon hobo answer behavior do not say this it is very easy so leave it I know you can explain let me give you a tough question early vedic to puranic question acha safal heji tamar na
एत्ते पल्ला कला परे नाउ लेट्स गो टू अर्ली वैदिक अर्ली वैदिक लेखी लेटर लिखिनी खाली वैदिक लिखिनी पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक was good sabha samiti vidhata I hope you still remember all those things sadha vidhata vinata women even today in a Hindu society men are impure unmarried men are impure only married men are pure jadi tara stree ta bhitare kevote mari buda gala then men will again become impure only women are pure and we cannot help in it this is how our thought process is but in the rest of the world women are impure the polluting agents by knowing this the proposition was good sabha samiti saman jaki basanti well and fine well respectable and men are known from the name of their women in the form of mother wives or anything or women during early Vedic times consider the following statements a style यार कौन style थला क्वेश्चन पढ़िबी तापर एठी से देखिबी अच्छा करेक्ट पचाच हाउ मेनी पचाच ये गोटे चलती नुवा ड्रामा हाउ मेनी माने केतेटा ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट હવે કેટલા કરેક્ટ देखिए they were permitted to attend sabha samiti gatherings early Vedic na yes later Vedic रे कटियो early Vedic दे सभा विधाता रे अलाउड थिला ना सभा समिति रे तो नहीं होला सभा विधाता रे अलाउड थिला ना सभा समिति रे अलाउड थिला इन द ड्यू प्रोसेस एटा क्लास बुझी थिलवा समिति रे अलाउड थिला ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम दे themselves will stay away because कारण set समिति was for that of the political consideration में more or less war होतला जे तो war होतला women मनकर war रे किछि काम रहिलानी gradually they will move away hence later Vedic रे समिति भी कटि जिवे but they were allowed they are not going that's a different thing but they are highly needed in vidhata and sabha रे समस्त आसी बसिबे so they used to come so that they can choose the samiti choose कला बेलकू men माने choose के जानती women माने निजे कोनते कि हमर किछि काम नै but permitted political काम को जान देनी permitted ना हाँ बसंती ना forcefully बसंती नी later Vedic रे choice रे बसंती नी early Vedic रे कौन पाई की बसंती later Vedic रे दो stories are been done permitted ना हाँ बसुथिला due process of time रे बसियोनी early Vedic रे ही बसियोनी तो due process of time बसियोनी काहे ना continuous warfare चलला gifting of female slaves was common during this period common लगला ननु किंतु priestly class को मन पड़छि द women slaves दिया होथला मन पड़छि priestly class जेति common लिखि दउ छिताल हो और सेटा को women थला मन पका see these things are not being said by me this is said by your NCERT so do not question me back तो सारे टीआ लिखै छी सेठी से लिखि छी एमती बुक रे लिखाइतला सब लिखाइ छी गोडा आरके कुहाई छी का को NCERT को से क्वेश्चन भाई आम पाखरे कोनोसी जिनसरा प्रूफ नै तो NCERT कहउची मु कहउची do not question me back being a patrilineal society मतलब father based मतलब men dominated matrilineal descent was completely absent no complete नथिला matrilineal भी थिला but society was patrilineal no doubt in it hence we will be wrong gote ठीक only one will be correct what answer only one एठी परमिटेड लिखाइ चली हे गला न नहीं न ना no evidence अछि Tolkapiam where is एडा हेच लास्ट क्लास रे ग्रामर ट्रीटिस Tolkapiam एटा जो संगम रो क्वेश्चन Tolkapiar ग्रामर ट्रीटिस एडा हेच लास्ट क्लास रे which ancient port city served the significant center for maritime trade during the Sangam period माने
पळे आस तमिलनाडु जोन को कम टू दैट पार्ट तेणु कर एटा पोर्ट सिटी तले के हितो का अच्छा पुहार मोस्टली नाटक लिखिबोनी हला से लिखिबो पुहार कावेरी पट्टनम जेटा होची माउथ ऑफ कावेरी आसी जेतले बेसी एटी आसी कि माउथ ऑफ कावेरी रे पोर्ट कराइछ नाउ टेल मी anyone of you just tell me why mouth of Kaveri will become a port, why not any places over here or here? Mouth of Kaveri को से मैंने port कहीं की बनेबे? Anyone? सर आउथरे टिके को जगह को बनाला ने आउथरे तू खाली मते कह एटा होची कावेरी असला एठी मिसला एठी ओटा पोर्ट थिला ताना होची कुहार पोर्ट और से प्लेस ना होची कुहार कावेरीपट्टनम टूल इट इज कावेरीपट्टनम just tell me in the Sangam period why they have chosen the mouth of Kaveri to become a port. माउथ ऑफ कावेरी को पोर्ट वाली काहे की से माने चूज करले ऐसे कॉमन सेंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से तो ट्रेड करिया पे इजी रूट अरे चल तो एठी भी कर दै थांती एठू भी साउथ ईस्ट एशिया जीवु एठू भी साउथ ईस्ट एशिया जीवु सेठी भी अछि किंतु एठी स्पेसिफिकली कावेरी माउथ रे काहे गले इजी अरे कारण बुझु एठार जियोग्राफी टा हार्श अछि अरे पेनिनसुला प्लेट्यूटा मूवमेंट ऑन द लैंड इज नॉट दैट इजी किंतु जो नई अछि तो नई पटे तार बहुत ट्रिब्यूटरीज भी तो अछि ना तो ट्रिब्यूटरीज पटे माल को आनी की गुड्स को आनी की शिफ्ट करी के आनी की एठी पहुंच जाय परि माउथ रे इजीली बुझो जो कहू छु इट्स अ रिवर नईटा फ्लो करछि तार बहुत ट्रिब्यूटरीज भी तो अछि ट्रिब्यूटरीज रो ट्रिब्यूटरीज अछि तो कोई एठु जदि तो माल ने के आसी गुड्स ने के आसी तो एमिति नई रे बस के एठी पहुंच जिवु एठु न बसले एठु बस एमिति आसी जिवु एठी जदि थिबु ताले अल्प ट्रैवल करी कि नई को आसली वरी नई रे आसी कि पोर्ट रे पहुंच गेलु ए पोर्ट रे बस तू चललु कोठी ना साउथ ईस्ट एशिया ट्रेड करी आसलु एठु कोडे पळे आसलु ना श्रीलंका ट्रेड कर दलु जेहेतु कावेरी डीपर इनसाइड लैंड रे पसची आ तार ट्रिब्यूटरीज अछि आ ट्रिब्यूटरीज थ्रू रे तू नेविगेशन करि परिबु ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सहज हे जाउची तेनु करी रिवर माउथ रे पोर्ट बनांती बुझेला एटा सबुठे लागियो पत्नी कल्ट काली क्लास रे हिची सी नाउ द क्वेश्चन आर गेटिंग रिपीटेड दिस इज द ब्यूटी तो 4-5 हजार क्वेश्चन लगे जीवु 1200 रु बेसी कांसेप्ट आ नाही तापर क्वेश्चन रिपीट हबो जो रिपीट हबो यू क्लियर हो पत्नी कल्ट आइडियल वाइफ कांसेप्ट कन्नगी associated with worship of goddesses Kannagi was introduced by which dynasty Chera during the Sangam period factual Chera factual start hela on eta phone thare super easy Sangam literature is predominantly Sangam ta hi Tamil in which language Tamil Sangam padhi jab ku padhiba kali class में भी यही चीज Which of the following works is considered as a sequel to Silpadikaram and focuses on Buddhist themes? And hopefully you all have read. Now tell me, what do you know about Silpadikaram? Na padhi ju BJP government was Silpadikaram. State PSC से ना पचरी परे mostly UPSC तो पचरी. Set out a love story type. कहा कोवलन कन्नदी से चेहरा टाइम रे गुटे राजा रे माने किंगडम रे थिले तापरे विथ टाइम जेताले कोवलन को थेफ्ट रो केस रे राजा माने मारी दियंते तो तापरे कन्नगी पूरा
से पंपुहार सिटी को माने कर्स करते तापर टू कन्नगी को पूजा जो कराला सेटा कोई पतिनी कल्ट को गला चेरा रो जो फर्स्ट राजा थिले सेटा को स्टार्ट करथिले। Now your homework is go and see what is eta tama class रे एजुकेशन what is तिरुकुलार कोराल तोलकिपियम ए जोड़ा ए तीनटा तमा क्लास रे ए चारटा को जीवु गूगल करिवु देखिवु ए जिनसरा कोन हालांकि तमर तीनटा चारटा क्लास बने है स्टिल देन just go and check out सब जिनसरा टिके टिके I do not know, I do not want any depth story. I simply want you to know the story upor uporiya so that you are in a position to Silpadikaram ra tapore Mani Makkalai is the daughter and hence the themes of renunciation of Buddhist philosophy. Buddhist philosophy is a class rehechi renunciation is a class rehechi jodi link करके से किसी पचारिला you are in a position to do that also पढ़ी के त टिके आसे को पड़ियो क्लास को हर्षवर्धन पुष्यवती डायनेस्टी सो मिसे के लेजना हाउ भाई आशा हर्षवर्धन हर्ष पुष्यवती डायनेस्टी पोस्ट गुप्ता रा जहा सब गप तू सब लेखे हर्षर गोटे होची नुवा स्टोरी से सब करची पुलकेशन 2 को हरेची से सब एवरीथिंग इज ओके पोस्ट गुप्ता स्टोरी एवरीथिंग इज फाइन यू नो वेल एंड फाइन हियर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जैन मॉन्क्स ब्राह्मणिकल मॉन्क्स और ब्राह्मण मन को लैंड दवा छड़ा ये ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होल्डर्स मन को भी लैंड देछि आउ जेतक गप तमे सब जानिछ सब ठीक द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर सो कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया सब हमें मानिलु सी किंतु इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम बुद्धिस्ट हे जाइछि तणु करी द लास्ट ग्रेट इंडियन रूलर बोली ताको कुहाला कारण या पर ग्रेजुअली डिक्लाइन है कि इस्लामिक इन्वेजन हो इन दैट सेंस एरा कुहाइछि हर्षवर्धन जहा पोस्ट गुप्ता सब स्टोरी अछि गोटे जिंस से सिग्निफिकेंटली जोड़ीछि ब्यूरोक्रेट्स मानको को भी से लैंड गिफ्ट से देछि okay which of the following statement about Harshavardhan is correct he was the last ruler of Gupta empire no bhai ye post Gupta Pushyavati dynasty wala ye tala habani CD Harsha empire extended across the entire subcontinent very north re basila that too pura north bhi nathila Harsha was defeated by Pulakasin II Naha of Chalukya dynasty na yes that's easy Harsha converted to Buddhism हाँ एटा जाइन तो ठीक अछि in his reign and declared it the state religion of his empire no we do not do nonsense and hence state religion was not been declared so answer will be C से बुद्धिस्ट हेतिला ना हाँ से बुद्धिस्ट हेतिला बोली गोटे पॉइंट आसी कि भारी सॉफ्ट हे जो हला नॉन वायलेंस को बहुत आगु जीवर one of the reason of his decline also of his empire's decline you need to be dharmic dharma is different from religion dharma means duty as a king there you have specific duty and one of the duty is to safeguard your state for that you can take actions and that is dharmic lokora marigala bhai maribo na kain ki that is your duty you have to safeguard your masses to safeguard India means to safeguard 1.4 billion people simultaneously. It is the duty of the state and hence Operation Sindoor will come into picture. Though I am not very much happy with only Operation Sindoor, that's a different thing. We want more Sindoors. Getting what I'm saying? You just not say, oh, many people, let them be terrorists, has died in POK. You cannot say. Harshavardhana has forgotten those concepts and hence that will lead to their decline. Hopefully you are getting what I'm saying. The periplus of the Erythraean Sea, actually, an ancient Greek text refers to which Tamil kingdom known for the trade in pearls? Pandya. Pandya. That is factual, huh? I cannot deal with these things. Easy. In Buddhist philosophy, which of the following concept? Asla concept. Buddhist philosophy. सब बुद्धिस्ट फिलोसफी not अनेकांतवाद शायदवाद theory of impermanency cause effect मन पड़ले सब निरात्म्यवाद अनात्मवाद
प्रत्युक्त समुत्पद, all the things, or else go and watch the video. तेरा कहार किसी मन अच्छी बुद्धिस्ट फिलोसफी आज्ञा एमित न हो कि मुई बुझौची मुई बुझुची, just go and watch it. अनिक एटा होची अनाथ क्वेश्चन पड़े, which of the following concept refers to the absence of permanent unchanging self? एटा कोन सब थर पचाइबो, निरात्म्यवाद, निरात्मा आत्मा से तमे जो आत्मा को सेटा नहीं, एटा हेछि काली क्लास रे, और अनात्मवाद और नो सोल थ्योरी, a permanent eternal soul transmigrating from one body to other body, सेटा नहीं, desire जोगु जेतले मोर लाइफ रो लास्ट मोमेंट, नॉट लास्ट सेकंड माइक्रोसेकंड, लास्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ रे मोर किछि डिजायर रहि जाइछि, जदि डिजायर रहि जाइथिबो ताहाले मोर पुनर्जन्म हबो, that desire will become the cause and my rebirth will become the effect. Hence you need to become desireless. Gita said that as niskama karma. To get rid of the desire, we have ashtangic marg, so we do not have that eternal soul, that is called as anat or anatmavad or niratmavad or no soul theory. It is anat, no soul theory. The Four Noble Truths in Buddhism. How many of you can say me the Four Noble Truths? अरे कहले कि जने चारटा ट्रुथ कौन? What are the Four Noble Truths? अरे मन अच्छे ना मन नहीं, मन नहीं जल्दी जल्दी कह। मैंने सब फेरा रही गले, अरे गुआटे पढ़ल सब? अच्छा सर कौन कौन दले सर मेसेज रे लेखि दे चंदी पिला माने मेसेज फैसे मत देखा नहीं I cannot see message, I can see only that bloody PDF. I'm not in that page, huh? So there is suffering, there is a reason for suffering, there is a cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering. So the first ए चारटा को ट्रुथ से कौन पाएंगे देले? So that से 10टा मेटाफिजिकल क्वेश्चन को एड्रेस करनु, से दिस लाइफ सफरिंग रु बाहर या कथा से कहूची, दैट्स इट, दिस लाइफ सफरिंग। एग्जांपल का देथिले ना आरो रो, मते कि ओटे तीर मारला मो छाती रे पसला, मगा तीरटा काढी की उनटा को ट्रीट करबी। आरो रो क्वेश्चन पढ़ले बुद्धिज्म मारी के आसीबू, एलिफेंट रो क्वेश्चन पढ़ले जैनिज्म मारी के आसीबू। For Four Noble Truths, the nature of suffering and its cessation. The eighth path is called as Ashtangic Marg. Which of the following schools of Buddhist philosophy emphasizes the concept of sunyata? Sunyata पर class है, पूरा class है, or emptiness. It is truly not emptiness, but okay, normally seen as emptiness. ता ना ही माध्यमिका शून्यवाद, माध्यमिका माने ही मिडिल पाथ, शून्यवाद माने कौन? In short, the true nature of the ultimate reality, it's so infinite that my finite mind cannot know. I do not know the real nature of it. स्वभाव लक्षण मु जानी पारुनी तार स्वभाव लक्षण टा कौन? Hence empty, it is not zero. Getting? I am unable to know the inherent nature of the truth, the self nature, स्वभाव लक्षण. I cannot describe it. It is there. It is beyond my words limitation. Prapancha shunya. Beyond description. It is there. Prapancha shunya. Swabhava shunya. Mutara swabhava jani parni. Swabhava shunya. In that sense shunya. Prapancha shunya. I cannot say that.
within my intellect, my 4 levels of 4 ways of intellect मुझे जानी पड़नी चतुष्कोटि विनिर्मुक्त ये तीनटा वर्ड मन रहिला चतुष्कोटि विनिर्मुक्त पढ़िले माध्यमिक शून्यवाद स्वभाव शून्य पढ़िले माध्यमिक शून्यवाद और ओनली माध्यमिक जेमती एथि लिखिला और स्वरूप शून्य बुझला किंबा सो लक्षण शून्य एरा सबुद कोन ना माध्यमिक शून्यवाद रे hopefully you still remember these things in the context of Buddhist epistemology the term pramana means proof the term pramana refers to now tell me the answer of 80 and do not write I cannot see say in the context of Buddhist epistemology the term pramana refers to do not say me C I'll ask you why not A then what is A is called as or forget that tell me what is pramana Teaching sir evidence. huh? Teaching sir evidence proof. प्रमाण माने होची देख बुझू the theory is about getting rid of this life suffering first point suffering is because of ignorance will get rid by that of the knowledge what is the true knowledge I need to have that proof of it the proof of the true knowledge is called as pramana over here I just जदि सकाळे उठिली शीत दिन होईची कुहुडी देखा जाउची I cannot say कि कोठी गोटे नुआ कोठी गोटे निया लागि कि धुआ हो जाइछ I cannot say it is truly कुहुडी so that is not the true knowledge so hence I am finding that true knowledge in that sense it is the pramana of that knowledge means of valid knowledge will be the answer बुझिउची pramana sei sense कोइची now there are various types of pramanas buddhism re more or less gote nechi perception or pratyaksha re mu dekhuchi pratyaksha agote hochi anumana inference perception ene मन रखे आगु बुझेबि नि आगु एटा बदे अछि perception मो sense organ मते जहा कहूची I cannot see air जासी मो स्किन ने बजले मो स्किन कहले कि अच्छा ताले मो कुछ पवन अछि I cannot see taste I cannot see sound these sense organs are giving me the validity of it the validity of the knowledge hence pratyaksha praman or perception as a proof for the validity of the knowledge which is pratyaksha apart from 5 sense organ we have 6 sense organ also in philosophy I have said this various times that is mana मोर मन होनी आउ डिस्कशन क्लास रे बसिबिनी से जो मनटा दैट मन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन यू एंड सोल सॉरी फीलिंग एंड सोल मन थ्रू रे ही फीलिंग टाकू जानुची सोल टा तो मन प्रत्यक्ष प्रमाण बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण दरकार नहीं है दैट इज परसेप्शन 6 सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्वड टू getting a valid means of knowledge that is called as pratyaksha praman next is jodi nahi tale notes bana gutote next is anumana mane inference tu dhara car re jauchu ote pahad te achi ta pachru dhua baharuchi bahut jore dhua baharuchi hence you are saying the hill is smoky hence there should be fire tu fire ta ku dekhunu किंतु तू कहूचु धुआ बाहरची माने निया तो hence you are getting the knowledge of fire by seeing smoke the fire is a valid knowledge here you are not seeing perception to houni tu anumana to karuchu that is not a guesswork this is a valid knowledge to guess karnu dhua achi mane niya thibo there is a inheritance concomitance between smoke and fire that is anumana pramana this is pratyaksha pramana is
is a means of getting valid knowledge. Why we need knowledge? Because we are suffering due to ignorance. Ignorance can be get rid of by knowledge, but that knowledge should be valid. For that validity of knowledge, you need to have a pramana of it. बुझलो बुझला प्रत्यक्ष अनुमान जदि भूल भाल करके आसो एग्जाम रे माडा खाइबो तापर मोठू बाकी जिंस लिखाई छी पढ़ दो मोनास्टिक रूल्स बिना पितक एटा क्लास रे हिची जस्ट गो थ्रू इट यू विल कम टू नो super factual. Consider the following pairs: kingdoms, their capitals. Just go through it, nothing to say. Consider the following statements about Buddhist and Jaina literature. Okay, Jaina literature. Again factual, but okay. The earliest Jaina texts are known as Angas, ठीक है, composed in Pali. The earliest Buddhist text known as Tripitakas, okay, makes sense. Written in Sanskrit, or Sanskrit को समझना है विरोध तो है ना, written in Pali, so neither. आंसर कौन है? neither. माने जोड़ा कर फास्ट पार्ट तो ठीक अच्छी, सेकंड पार्ट वाला भूल अच्छी. अर्ध मगधी लिखाई थला, जस्ट गो थ्रू टा. पाले नो अर्ध मगधी पाले लिखाई थो कोटा हमर बुद्धिस्ट कोडा वाला. पाले लिखाई छी बुद्धिस्ट एटा लिखाई छी अर्ध मगधी फैक्चुअल, जस्ट गो थ्रू इट. हिंदुस्तानी म्यूजिक ऊपर तमर हेची रागस विषय क्लास रे कोइ छी 80 तमर टेस्ट डिस्कशन आई थिंक फर्स्ट डे और सेकंड डे हिंदुस्तानी म्यूजिक विषय करा हेची. एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक रे एते घरानास कोन पई की कर्नाटिक रे कोन पई की नुह की प्योर सेंस रछि व्हाई कर्नाटिक इन्वर्जन हे पने एटा एंटरटेनमेंट पर्पस पे भी हे परियो. All those things done in class in the previous discussions, go through it. It includes devotional music like Hindustani, Kirtan, Bhajan and Ragas, na yes. Thumri, Dhamar, the types. Taranas are semi-classical forms of Hindustani music, na yes. Answer C over. Each classes, just go through it. Tara kichi doubt achi, you can ask me here. But it has already been done. The border question daila. The dance form, mane classical dance question asla. Introduced by Shankaradeva. Shankaradeva पढ़ला माने मोर प्रथम कथा मन पड़ियो सतरिया. अच्छा. Was an amalgamation of the खाली classical dance पढ़ी गया थू टॉपिक टा तो यहाँ का ना सुनी चु सतरिया आसाम तू सुनी चु तू जानी चु एटा. जदी जानी नु जदी पढ़ी नु then घटना चक्र will do rest of the things. देखियो ए नॉलेज भितरे ए नजर काम होई दियो. The dance was introduced Shankardeva. It was an amalgamation of dance forms of Ojjapalli and Devadasi. Ojjapalli was a local folk dance. Be there. Devadasi, you know very well what is Devadasi system. Waist cloth is worn while performing by both men and women. Okay. Musical instruments like khol, cymbals, manjira, flute are used while performing the dance. Okay. Major focus of dance form on the devotional aspect of dance. Okay. Which of the following dance form is discussed in the above paragraph? Okay. Easy. Satariya. Shankaradeva aschi mane hi se habo. Ojjapalli Devadasi system, there's a एथरे जहा लिखाई छी तुम खाली ए शंकर देवकर ना सुनि के ही कर दे परियो किबा ओजपल्ली एंड देवदासी सुनि के ही कर दे परियो. दैट इज सतरिया असम. फैक्चुअल क्वेश्चन once again. See असम शंकर देव. ओके. मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, all these things been done. माने कोन हे छी बता जी. Again Sri Krishnadevara came into picture. We are back to Vijayanagar. Okay. Let's see. He built a new city called Nagalapuram. Nagala Devi Mankana in the memory of his mother Aila. Nagala Devi na yes. Mankana and son used to do. So no big deal. He was
किए देछि कृष्णदेवराय he was defeated at the battle of Talikota. विजयनगर हारिछि कृष्णदेवराय नुह किए थिले ना राम राय defeated in the battle of Talikota by the combined forces of Deccan Sultanate. Wrong. One only. Clear? Again factual. Ramaraya देखिए battle of Talikota, Alia Ramaraya, Deccan Sultanate, Bijapur, Golconda, Ahmednagar, Bidar. That time and hence they went against, and the Ramaraya will get defeated, and the kingdom will get disintegrated in the due process of time. 6th century BC. चुपचाप पळेबु बुद्धिज्म को आउ कुआडे जाई परिबु महाजनपद को जाई परिबु आउ कुआडे जाई परिबु ना ट्रेड एंड कॉमर्स को जाई परिबु एग्रीकल्चर को जाई परिबु एंड राइज ऑफ कोन सिटीज को जाई परिबु सब 6th सेंचुरी बेसिस तुमको 65 सेकंड दिया आइची एग्जाम हॉल रे टाइम स्पेंड करिबु एमितिया डू नॉट गेट कंफ्यूज 6th सेंचुरी बेसिस माने सब जिंस को तू आगो पळेइलु तापरे एठी मते सहज हबो तापरे often this is a second wave of urbanization सब पॉइंट या भीतर आसी पसियो महाजनपद बड़ होउची एग्रीकल्चर होउची बुद्धिज्म आसी स्टेबिलिटी आसी ट्रेड एंड कॉमर्स होउची सब आसो या भीतर आयरन आसी मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तापरे एठी आसु तापरे एठी आसु सिलेक्ट द करेक्ट पछाची राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड सिटीज ना हां भाई महाजनपद इन हबो cities na yes growing use of irons na yes development of coinage trade and commerce hochi ba yes all the three 86 ta bujhela Yes, sir. I'm going faster now hopefully you aguru ame sabu kari ke asu chola ene mu just tam कहथि कोन following size of administrative regions in Chola administrative region तो मुझे कही जस्ट कि समय आगु मंडलम माने प्रोविंस माने किंग माने किंगडम भितर गोटे प्रोविंस हो गला तापर मोर मन अच्छे आई स्टिल रिमेंबर वालनाडु तापर नाडु कुर्रम टा होची विलेज रो इट कुड बी वन विलेज और फ्यू ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में कुर्रा भी कहती कुर्रम भी कहती मोर पूरा आज मन अच्छी मंडलम माने किंगडम पर सब बड़ था मंडलम जोटा कि स्टेट सब छोट हूँ कुर्रम मुझे नॉलेज भी कर दे पारि मोर एटा मन अच्छी वालनाडु तापर नाडु प्रिलिम्स रे अधा पंथा visible now Yes, sir. Screen sharing. अरे लाइन पड़े लेने फोन ने लगे कौन थे we're trying to wind up today huh? At least the test one mandalam Vallanadu Nadu Kurram
अधा पंथरिया नॉलेज मन रखा मंडलम टा सब बड़ एचएल मेंबर कुरम टा छोट Mahajanapadas. With reference to Mahajanapadas, go back to the time of Mahajanapadas and all those knowledge, again factual. Borocheta, Brigu Kacha, Gujarat Borocheta, and Tamralipte, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রে এটা আমি কোউঠু পড়া না পড়ো গোটে জায়গাতে তুমি পড়িব মডর্ন হিস্ট্রি রে এটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রে আর ও जोड़ागा पोर्ट जगह आ रहा with reference to Mahajanapadas period where port cities and देख मते एति पई सहज लागुची when I was a student मु एते एमसीक्यू लगेची एते लगेची माने मोर आदि जाय के भी कोन होची मन पड़ी होची बुझला ताकू कोनती परिश्रम करिया आ टेस्ट पेपर एमती बना हैची जेमि तम मन को दुख हबो गुडा क्वेश्चन तमे कर परिबनी आ तम फ्रस्ट्रेट लागिबो तारी भितरे बाहर की बॉय फे खोजु की गूगल फुल करी या छोड़ करी देखि पढ़े की विड्थ बढ़े की जीवु ताले प्रीलिम्स रे बाहर जियो से ओपीएससी कोन करछि न करछि हु ब्लडी केयर्स विड्थ एते बढ़े जा से बाहरियो with reference to ancient Indian history Dipankar and ette factual kono Santrashikta was famous for Buddhist scholar era Buddhist scholar देखलु हां renowned scholar teacher era factual era देखि दो era consider the following statements regarding Aila Ashoka's policy of dhamma dhamma upare specifically कहिछि मु तुमको now tell me what is dhamma अरे कहला what is dhamma what is dhamma कहले कि सबडो what is dhamma Sir, ethical and moral code. ethical and moral code So duties. Makes sense, yes, rather it is. So can that be a sectarian faith? Use your logic. No, sir. Kahin हमनी और मोबाइल नेट रे चलछु तो आखि सुभा जाउनी मते तो छाड़ दे आ खाली मुई कहबी सेकंड फेथ ना भाई हबनी फेथ अलगा धर्म अलगा क्लास है छी धर्म माने ड्यूटी द ड्यूटी ऑफ फायर इज टू बर्न काली जदी निया न जळेबो देन इट इज अधर्म फॉर फायर कैन यू गेटिंग द डेप्थ ऑफ द कांसेप्ट ऑफ धर्म every mother loves her children let it be a Hindu mother or a Muslim mother or a Christian mother it has nothing to do with God it has nothing to do with faith aji mora ya faith achi kali mora faith change he jai pare but dharma will never change the duty of son will be done by son the duty of water will be done by water duty of father will be done by father that is what is eternal sanatana dharma sanatana dharma is because of this there's nothing to and that too it is not a sectarian faith one sect does not believe in other sect Shias do not believe in Sunnis even within the Protestant Christians Germany can only have Lutheran church and the British or the England can have Anglican church you cannot go for a Anglican church in Germany they will kill you one sect do not believe in other sects but dhamma is an universal concept dharma it's a pali term of dharma hence it cannot be faith or a sectarian faith it cannot be oh let's see the question is not correct that this statement is wrong answer will be okay it held that if people behaved well they would attain heaven and nirvana prakutare
truly Dhamma had not talked about nirvana. से कहिनी किंबा nirvana is the concept of moksha or salvation. धम्म कले तमे हेवन जीव से सेया कहिछि किंतु बहुत बही रे मु एटा देखिछि तेणु करी मु एटा लेखिली काले की क्वेश्चन बनछि एमति जदी पढी थिबो बनै दबो ताहाले ट्रूली धम्म was not talking about nirvana. धम्मर मेन एम थिला अशोका धम्म आनीची कि कलिंग वार परे से फाइनेंशियल क्राइसिस से पड़छि तार स्टैंडिंग आर्मी नाही सोशल फ्रैगमेंटेशन हेइ से तार स्टेट को पूर्ण थर बनौछि ताको सोशल स्टेबिलिटी दरकार है सो धम्म वाज द हाईएस्ट वेपन दैट ही कैन यूज फॉर डू नॉट राइट ऑल दिस थिंग्स तेणु करी से सब मोरल गुड एथिकल गाइडलाइंस करा दउछि निर्वाणा रा या भीतर किसी काम भी नाही से कोछि जदी तुम भलो भलो कामरा करिवो ता तुम हेवन जीवो. But few of the authors has written this, hence I have included that in the option. Truly जब तू देखिबे रा किंतु तोर भूल हिजो माने स्टेटमेंट ता भूल हिजो तो बुझला किंतु हमें ताको हां बोली मानिया हो स्टेटमेंट ठीक है एटा भूल हिजो. I repeat, Dhamma is all about, you cannot write, it is all about making the society stable because Ashoka was suffering from that of the heavy financial loss and no standing army. The Kalingas has reduced all the standing army into nothing. Still Ashoka was keeping 2.5 लाख लोकों से रखिथिला prisoners of war करी से रखिथिला से तार स्टैंडिंग आर्मी बनौछि से सब करूछि धम्म नारे से किंतु करी चलछि दिने से सब जिंस करी भी दबो बुझौछि प्रकृतरे निर्वाण हबनी प्रकृतरे हवा कथा नुह किंतु बहुत बड़ बड़ अथर माने लेखुचंती and I do not stand in front of them, hence I have no other option than to say okay fine it is correct किंतु truly it is not. बुझियोछि कोन कहूछि मु In reference to Indian history, which of the following best describes the meaning of the term अपभ्रंश? लैंग्वेज ता अपभ्रंश हुए द ग्रेजुअली एमती चेंज है कि डायलेक्ट आसी आसी सेटा चेंज हुए और सेटा इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम हो ताको वो टाइम लागो. लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे हिस्ट्री अछि नॉट द ओडिया लैंग्वेज डेवलपमेंट नॉट दैट हिस्ट्री आई एम सेइंग माने ग्रेजुअली केमती गोटे ओवरऑल हिस्ट्री गोटे अछि आज वी डोंट हैव टाइम नाउ वी आर स्किपिंग दैट पार्ट ताको पर केबे गोटे हमें करिया और एटा ग्रेजुअली आगु आसी सी हेछि medieval times सेटा बेसी देखा जाइछि and hence पड़ला vernacular language used in medieval India. Going faster, so let's go for the second. Indus Valley aslan economy of Indus Valley civilization. Consider the following statement. तापर कोन करिवि तापर एठी गेसी which one is correct, which of the statement एठी एबे लिख दोछि how many तू देखियो how many which of the statement is correct भाई एतो ठीक क they practiced English बोलो छे they practiced animal domestication. They practiced animal domestication. Yes, their lack of knowledge of plow restricted agricultural productivity. Oh come on, agriculture होउथिला Indus Valley civilization भी माने मेगा सिटीज बड़ बड़ सिटी अछि ताको पाखरे ग्रैनरीज अछि Kalibagan desert and all, everything is there. So they have the knowledge of agriculture. We have got the evidence of plows also. Hence, B is wrong. Only one is correct. C. Should we do rest 7 today or we'll take it to the next class? I do not think solving like this, the way we have dealt with the 91 and 92, will solve any purpose. You want it today or we should go for the next class along with the test 2 discussion? The next class. Fine. Okay.